Hello everyone. Today let's talk like a news bulletin about whatever is happening in the markets. ये एक तरह का gist है जो आज की खबरें हैं और पिछले हफ्ते से जो चीजें चली आ रही है, what all is going on. So I'll try again and keep it English so that both our Hindi and English audience can understand and grasp what is happening exactly in the markets. Also, let me just check. Yeah, so 10,000 plus subscribers. Thank you so much. It's all because of your uh, love, commitment, support. That 10,000 subscribers actually is not much, but मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था. I took it up as a challenge during COVID that within 3 years, actually within 5 years, can I reach 10,000 subscribers organically without pushing the videos. तो इसका मतलब है that content really works. Globally, I think there are 29 lakh YouTubers. 29 lakh YouTubers. पता नहीं ये फिगर इंडिया का है या ग्लोबल है, वो चेक करना पड़ेगा. 29 lakh YouTubers के पास 10,000 plus subscribers हैं. You made it big on YouTube only when you have 10 lakh यानी 1 million subscribers minimum. वो फिगर बहुत कम. But it's not, this is not my mojo or momentum. This is something to interact with the audience and whatever knowledge we have accumulated usko share karna, because basically at the end of the day we are educators and trainers by profession. Anyway, अभी क्या हो रहा है देखिए, जेफरीज की रिपोर्ट आती है. जेफरीज, सो इट्स बिन वेरी बुलिश ऑन बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. वो स्टॉक आप देखो, करीब करीब 400 500 से लेके आज 23 2400 2400 के आसपास चल रहा है. जेफरीज हैज नाउ गिवन अ बाय कॉल with a target of 2700. Now this is exactly where retail investors get trapped in these kind of stocks because वो बहुत लेट उठते हैं, न्यू इन्वेस्टर होते हैं. बाजार में अभी मोजो है, मोमेंटम है, तो बहुत सारे अब यहाँ से 19,900 के आसपास जो निफ्टी टुडे क्लोज हुआ है ना, 28 नवंबर 2023, यहाँ से आपको फ्रॉथ फ्रॉथ बनता हुआ दिखेगा बाजार में. सो दिस इज अ टाइम टू बी extra cautious, extra careful, and don't count your profit too early. But BSE is a good stock. It was a good company, but it is clearly getting into that overvalued zone. और जेफरीज के जो स्टॉक पे कॉल आती है वो पूरा मजा होने के बाद में कॉल आ रही है. So that was the first update. Secondly, LIC is really standing strong. Last week it stood up one day, 9% move उसने दिया था within a day. And insurance में usually ये होता है that pre-election बोलो या pre-budget, and especially this November December time में sometimes the railway stocks start rallying, but they've already rallied. Some years fertilizer stocks आपको दिखेगा rally कर रहे हैं. Pre-budget होता है usually. इस बार budget का इतना importance है नहीं because we have the election. So the actual budget will come in the month of July 2024. So this rally in LIC is not due to the standard rally. It is due to certain good quarterly updates which the company has given. पूरा insurance sector उसकी वजह से एक तरह से ऊपर की तरफ rally कर रहा है. So that was about LIC. Then Adani stocks for some reason see froth. Market में froth क्यों आता है? Because अच्छे bull market का ये खासियत है that a lot of poor quality stocks also start going up. Highly leveraged, highly in debt Adani Group. उसके आज आप सारे stocks का closing देखिए, all the stocks are dragging the Nifty upwards. Even Reliance is looking strong, but Adani Group, all stocks are firing on all cylinders. So clearly ऐसा तो नहीं होगा कि all of a sudden जो कंपनी पिटी हुई थी वो अच्छी हो गई. This is overvaluation, this is froth, and this is what I'm telling you कि this is where we as retail investors specifically have to be very careful. Look, point number 4. Look what happened with UCO Bank. UCO Bank. To my knowledge, it's not a private bank. कल ही मैंने आपको SBI के ऊपर पूरा लंबा ज्ञान दिया था. यूको बैंक में कुछ फाइनेंशियल मतलब आईटी रिलेटेड इश्यूज हुए जिसकी वजह से मनी ट्रांसफर हो गया फ्रॉम IDFC फर्स्ट बैंक, एंड इट डिड नॉट आई थिंक गेट क्रेडिटेड टू यूको बैंक. This happened with many customers somewhere in the Jaipur and Jodhpur area, and it to the tune of around 700 to 800 crore was of money is being investigated now. कि कहीं ना कहीं systemic failure है. This is not exactly the bank's failure. They must have not upgraded their systems.
अल्टीमेटली बैंक चलता कैसे है? So much of the bank today depends on the technology, the IT services that you take. So if these kind of mishaps are going to happen, कैसे आपका ट्रस्ट बैठेगा बैंक के ऊपर? आप खुद सोचिए. तो यूको बैंक का ये अपडेट था. देन टाटा टेक्नोलॉजीज का लिस्टिंग होने वाला है 30th November. ओके, 30th November is Thursday. It is weekly expiry for this week, monthly expiry for November, and on 30th November there is some international updates which are supposed to come. Plus there is the all important exit poll which is going to come. Exit poll आ जाएगा दोपहर को या शाम तक, और 30th November Thursday है. एग्जिट पोल किस चीज का? 5 स्टेट के जो इलेक्शंस है उनका नतीजे आएंगे. And that is the semi-final of our national elections. We are not political channel at all, but elections impact our equity markets, and that's why we have to kind of mention it, because directly, indirectly, market में investors को चाहिए stability and continuity. Now, as per my analysis, out of these 5 states, if 3 out of 5 states are won by the party ruling in the center, मतलब 5 में से 3 स्टेट अगर सेंटर में जो पार्टी रूल कर रही है उसको मिलते हैं, एज पर माय एक्सपीरियंस, तो मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली फिर भी ले सकता है. बिकॉज तेलंगाना एंड द अदर स्टेट वो आप छोड़ दो, उसमें तो रीजनल पार्टीज का ही होगा. But there are some seats which are swing seats which could go either way, and this is the first time in the last 20 years, I think, कि nobody is able to predict a clear mandate. मतलब ये साइड वाले भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो साइड वाले भी कुछ बोल नहीं रहे. So Thursday 30th November is going to be like a game changer, guys. बहुत अपडेट्स आएंगे. हो सकता है मार्केट में वॉलेटिलिटी हो. Interestingly, Nifty is facing its toughest resistance now. Today's closing is around 20,000 पे उसका पहला psychological resistance है, and then 20,250 पे उसका लॉजिकल रेजिस्टेंस है. अब निफ्टी का जो चाल था मेरे हिसाब से फॉर अ प्री इलेक्शन, प्री ईयर एंड मूव, पोस्ट दिवाली मूव, वो खत्म होने आया है. आई थिंक वी आर रीचिंग दैट स्टेज वेयर इफ देर इज इवन अ स्लाइटेस्ट रीजन या बहाना, मार्केट को गिरने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है. वो बहाना अगर गॉड फॉरबिड, फिंगर्स क्रॉस्ड, इलेक्शन के रिजल्ट्स में आया, don't be surprised if Nifty tests a little lower level. It could be a testing of the lower levels again, which we did last month. But December Jan में वैसे भी FII सेल करते हैं guys. और forget FIIs, December Jan में अपने local mutual fund वाले भी सेल करते हैं. वो लोग भी अपना performance दिखाते हैं. So December, Jan, especially January, forget December, especially January is supposed to be, the first 3 weeks of January are supposed to be, एवरी ईयर अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो अराउंड 21-22 जनवरी के आसपास कुछ ना कुछ बवाल होता ही है. दिस इज माय जेनेसिस एंड माय रिसर्च. तो अभी जो आप चाह रहे हो ना, अ लॉट ऑफ पीपल माइट गेट ट्रैप, बिकॉज इफ यू टेक अ फ्रेश ट्रेड नाउ, दिस इज नॉट द टाइम. निफ्टी 19,900 is not a time for fresh entry. If you're carrying your original positions, then you can consult your financial advisor, and I'm sure your financial advisor is equipped to guide you for that. But इतना तो तय है कि रिस्क काफी बड़ा है, क्योंकि 3rd December को रिजल्ट्स आएंगे एक्चुअल, एंड 3rd December is a Sunday. So if everything goes okay, 3 out of 5 minimum, we are okay. We have passed this kind of, we've survived the storm. ऐसे बोलो आप, we've survived the storm. So these are the 5 crucial headlines and market news updates, whatever. Let's see how markets take this kind of volatility. But at the end of the day, even if you're a trader, you're going to learn a lot from this. आप काफी कुछ सीख के ही इसमें से निकलेंगे बाहर. ऐसा मुझे लगता है कि there is nothing to lose in this if your positions are well hedged. अगर आप सही तरीके से hedging कर रहे हो, मुझे नहीं लगता there is much to lose in or fear in this. चांसेस है, देखिए जब मार्केट में सब बात कर रहे हैं ना, अभी हो रहा है कि बस अभी तो बुल मार्केट है, अभी तो ये होगा वो होगा. होल्ड ऑन, बिकॉज दिसंबर जैन थोड़ा एक साइकोलॉजिकली हर साल एक स्प्लिट ब्रेकर टाइप रह चुका है, एंड यू डोंट वांट टू सी दैट अगेन दिस ईयर एज वेल. So I'll see you in the next video, guys. Let me know your thoughts. What do you feel about this? And मिलते हैं अगले वीडियो.